हेलो पिला माने आशीष इन एजुकेशन यूट्यूब चैनल को तुम मान को स्वागत। आउ चलिए आज मु हूँ मानस सेनापति। चलो आज आम डिस्कस करवा कौन ना 2026 PYQ शिफ्ट 1 फिजिक्स ओके। बर्तमान का उपरे ना NCET ITEP इंटीग्रेटेड बीईडी उपरे ठीक अच्छे पिला माने आम कोचिंग सेंटर कौन ना दुईटा आगे आपको प्रोवाइड करुच्ची। जदि आप ऑनलाइन भी कोचिंग नापी चाहते ऑनलाइन भी नहीं पारे, ऑफलाइन नापी चाहिए ऑफलाइन भी नहीं पारे। ऑनलाइन पाई ए नंबर रे कांटेक्ट करंतु ठीक अच्छे। आ जदि ऑफलाइन आप जानापी चाहते आम कॉम्प्लेक्स कौटी कौटी आम आम लोकेशन कौटी ताले देखंतु कल्याणी कॉम्प्लेक्स विवेकानंद मार्ग भुवनेश्वर पाखरे आमर कैंपस अच्छी। कैंपस रो लोकेशन है कैंपस रो आउटलुक है यहाँ कैंपस एगुड़ा है तार आउटलुक तार ऑफिस होगा एगुड़ा आप देखिपारे स्मार्ट क्लासरूम मिल आपको आ सहित आपण मानक OUAT ठीक अच्छे NCET ITEP OJEE +2 फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर ट्यूशन एंड नीट जेई आ तुम OTET CTET कौन ना एग्जाम प्रिपरेशन आपण आमर आशीष इन एजुकेशन चैनल रे नहीं पारे ठीक अच्छे। बर्तमान जदि आम स्टार्ट करिया चलो फिजिक्स रो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन माने 2026 रो शिफ्ट 1 रो क्वेश्चन स्टार्ट करिया ओके। फर्स्ट पिला माने क्वेश्चन नंबर 1 कौन से कहे इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट द रेशियो ऑफ इंटेंसिटी ऑफ मिनिमा टू द मैक्सिमा इज 9:25। द रेशियो ऑफ विड्थ इज चलो देखिए कौन से कहे ना यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट रे इंटेंसिटी ऑफ मिनिमा और मैक्सिमा ओके। से कौन कहे आई मीन डिवाइडेड बाय आई मैक्स केते देछि 9/25। आम कौन जानते आई मीन माने कार ना सॉरी जदि दीटार आमको मिनिमा बाहर करिवार अछि ताले केमति लिखि परिबा हमें I1 माइनस रूट ओवर ऑफ I2 रो होल स्क्वायर। आ जदि I max तुम लिखा मैं चाहिए दैट इज I1 प्लस I2 रो होल स्क्वायर ओके। लेट से आम बर्तमान गोटे या सॉल्व करिवार इजी ट्रिक मु बते दूची। लेट से आम I1 टाको कोन करबा a नहीं जिबा रूट ओवर ऑफ I1 को a नबा रूट ओवर ऑफ I2 को b नबा ओके। देन आई मीन टा कोन हो जिवो माने डायरेक्ट चलो एट्रे पुट एई ऊपर इक्वेशन रे पुट करना चेष्टा करबा सॉल्व करिया पई दैट इज a माइनस b रो होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय a प्लस b रो होल स्क्वायर इक्वल टू 9/25 ओके। बुझी पारलो केमति कोनी केमति करली ना एटा को मुने गली a एटा को मुने गली b एटा को नेली a एटा को नेली b ताले ठीक अछि। एटा a माइनस b रो होल स्क्वायर हेगला ये a प्लस b रो होल स्क्वायर हेगला। a माइनस b रो होल स्क्वायर इक्वल टू दिस a प्लस डिवाइडेड बाय a प्लस b रो होल स्क्वायर इक्वल टू दिस ओके। ताले a माइनस b डिवाइडेड बाय a प्लस b इक्वल टू 3/5 ओके। ताकू सॉल्व करो कौन आछि ना 5a माइनस 5b इक्वल टू 3a प्लस 3b ओके। 5a माइनस 3a इक्वल टू 2a आ सेटी 3b प्लस 5b सेटी गले 5b हो तो दैट इज 8b। सो a इक्वल टू 4b। अच्छा से हमको पचारिछि कोन ना विड्थ आ माने जानि छंती ना विड्थ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट ओवर ऑफ आई रूट ओवर ऑफ इंटेंसिटी बा तुम कहि परिबो इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू विड्थ रो स्क्वायर। ताले ठीक अछि जदि हमको विड्थ बाहर करिवार थिला ताले हम केमति बाहर करिवा देखो a1 टा कोन नैथिला हमें I1 रूट ओवर ऑफ एटा हला 4 रूट ओवर ऑफ I2। तो जदि आमे दीटाकर विड्थ रो कोन करबा ना रेशियो कैलकुलेट एटु चेष्टा करबा दैट इज I2 डिवाइडेड बाय I1 रो होल रूट ओवर इक्वल टू W2 डिवाइडेड बाय W1 रो होल रूट ओवर इक्वल टू 1 is to 4
Okay, 1:4. So the correct answer is 1:4. Okay, option 3. The correct answer is option 3. Let's go to the next question. ठीक अच्छे, फास्ट क्वेश्चन समस्त को बुझा पड़ा और जदि बुझी न पारिछ जदि किसी डाउट अच्छी ताले कमेंट सेक्शन रे पचार. ठीक अच्छे, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2. In a small object placed at a distance of 3.6 centimeter from the magnifier of the focal length this, okay, the linear magnification will be, okay. से कौन कही फास्ट तो गोटे मैग्निफायर माने गोटे थिन लेंस कथा से कहूची ऑफ फोकल लेंथ 4 and placed at a distance 3.6 centimeter. Okay, u equal to minus 3.6 centimeter. Okay, answer देछि f equal to 4 centimeter. So we know for the thick lens, गोटे thin lens पाई 1 by f equal to 1 by v minus 1 by u. बाहर कौन कर v. ओके, तो 1 by f plus 1 by u equal to 1 by v. तो 1 by v equal to केते गला ना 1 by f 1 by 4 plus 1 by 3.6. ओके, कैलकुलेट करो ना नहीं ये गोटे माइनस साइन भी आसो कारण यू रे माइनस साइन गोटे अच्छी माइनस 3.6. सो 1 by v equal to 1 by 4 minus 1 by 3.6. ताको कैलकुलेट कले तुम पाइबो v equal to 36. ओके, v equal to 36. ताहले तुमरो से कोन पचारथिला मैग्निफिकेशन. अच्छा, मैग्निफिकेशन m equal to v by u. v केते ना 36. ओके, 36 या फिर देखिबोटा माइनस 36 आसुना कोन बिकॉज 1 by 4 माने एटा छोट संख्या. ओके, एटा तो गोटे छोट संख्या, एटा गोटे बड़ संख्या बाहरियो तो नेगेटिव साइन सियोर आसीबो. गोटे नेगेटिव साइन आसले माइनस 36 डिवाइडेड बाय माइनस 3.6. ओके, क्लियर, माइनस 3.6. सो m इक्वल टू केते गला ना 36 डिवाइडेड बाय 36 into 10 which is equal to m equal to 10. दीटा अगर नेगेटिव साइन रे नेगेटिव साइन कटिकी से पॉजिटिव हे गला. सो द आंसर इज ऑप्शन 2. द वैल्यू इज मैग्निफिकेशन रो वैल्यू केते ना 10. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन समझते देखो. नेक्स्ट क्वेश्चन क्लियर. या ऊपर भी जदि किसी डाउट अच्छी तो माने कमेंट सेक्शन रे पचारि परिबो. ओके ओके ओके, सिंपल, वेरी सिंपल क्वेश्चन ना. से कौन करछि, से कौन कहछि हमको न्यूक्लियर डेंसिटी ऊपर पचारुछि. कौन देछि ना 64 Cu29. जदि देखा जाउ नथो मु लिख देउछि 64 Cu29 यार न्यूक्लियर डेंसिटी पचारुछि. अच्छा, डेंसिटी रो सिंपल फार्मूला कौन, मास पर यूनिट वॉल्यूम. तो दैट इज मास पर यूनिट वॉल्यूम. ओके, अच्छा यार मास केमती बाहर करबा ना ए. ठीक अछि, मास नंबर तो ए. ठीक अछि, डिवाइडेड बाय 4/3 पाई आर क्यू. अच्छा, बर्तमान यार सिंप्लीफाई लिखवा पई गले 3a डिवाइडेड बाय 4 पाई आर क्यू. अच्छा, यार रेडियस केमती जानिबा. या रेडियस जानिया पई सिंपल ट्रिक ना r इक्वल टू आम जानते r इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a टू द पावर 1/3 है कि नहीं. ठीक अच्छे, एटा गोटे न्यूक्लियर फिजिक्स रो मेन फॉर्मूला. ओके, या फिर गोटे फंडामेंटल जिनस. सो r इक्वल टू r नॉट
a to the power 1/3 तो r नॉट रो वैल्यू से केते दे दीची ना 1.24 में 1.2 into a to the power 1/3 माने 64 to the power 1/3 ओके एरो ऑल वैल्यू तमे नहीं जाओ एरो वैल्यू तो तुमको कहि देली एरो वैल्यू 64 ओके एंड आर रो वैल्यू 1.2 into this for me तो रो रो वैल्यू तमे एठू फाइंड करो एंड मैच करो कोडा सहित इक्वल आछी ठीक अछि कैलकुलेशन जस्ट कैलकुलेशन करिवार अछि कर दबो तुम माने याकू ठीक अछि या ऊपर भी तुम माने समस्त कोन करो यार आंसर टा समस्त कमेंट सेक्शन में जणाओ ना ऑप्शन 1 ना ऑप्शन 2 ना ऑप्शन 3 ना ऑप्शन 4 जदि तुम मान को ऑप्शन विजिबल होनी ताले गोटे काम करो ना यार टोटल वैल्यूटा या फिर ओके ना नहीं मैग्नीट्यूड समस्त को जणाई दूची मु मैग्नीट्यूड टा कोन ना 10 to the power 17 ऑर्डर रे आसीबो तमे खाली ता पूर्व वैल्यूटा को केते ना 2.3 ना 3.3 ना 1.3 ना 4.3 ओके क्वेश्चन नंबर लिखि दियो 3 क्वेश्चन नंबर 3 रो कैलकुलेट करिके कहि दियो आंसर ठीक अछि मु तो सब बते देली केमति बाहरिबो जस्ट कैलकुलेट करिके आकु लेखो केमति कोन बाहर ठीक अछि नेक्स्ट क्वेश्चन इज चूज द करेक्ट स्टेटमेंट in relation to properties of electrostatic and magnetic fields से कौन कहिछि हमको करेक्ट स्टेटमेंट चूज करबार अछि the magnetic field and electric field both are long range yes we know electric field and magnetic field both are long range ठीक अछि electrostatic field is produced by vector source नहीं electrostatic field गोटे वेक्टर सोर्स रो प्रोड्यूस हुए नहीं इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड गोटे चार्ज रु प्रोड्यूस हुए जे कोन से गोटे चार्ज रु आमे इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड डिफाइन करि परिबा सो ऑप्शन बी तो भूल ओके द मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड बाय स्केलर सोर्स ये भी भूल ना मैग्नेटिक फील्ड गोटे स्केलर सोर्स जो प्रोड्यूस हुए नहीं गोटे करंट जो प्रोड्यूस हुए या फिर गोटे चार्ज रो फ्लो जो प्रोड्यूस होबा कोनना तमरो मैग्नेटिक फील्ड सो ऑप्शन सी भी भूल अछि सो option D the electrostatic field is long displacement vector joining the source and the field point yes এটা তো ফার্স্ট কুলম্বস লটা हो कि नहीं हम जो लिखते दीटा चार्ज लेट्स से एठी q1 लेट्स से एठी q2 ताको भितरे डिस्टेंस टा हला r तो हम लिखते ना f फोर्स इक्वल टू 1/4 pi epsilon naught q1 q2 divided by r तो सेटा तो से कहूची द इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इज अलोंग डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जॉइनिंग द सोर्स एंड फील्ड पॉइंट ओके सो लेट्स से सो द ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन इज ओनली ए एंड डी तो कौन ए एंड डी ओनली ए बी सी डी ए एंड सी ओनली बी एंड सी ओनली सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन 1 ए एंड डी ओनली चूज द करेक्ट स्टेटमेंट कहतला तो उसका करेक्ट स्टेटमेंट ए एंड डी ओनली ठीक अछि नेक्स्ट क्वेश्चन समस्त देखो से कौन कहिछि क्वेश्चन नंबर 5 कौन ना अरेंज द फॉलोइंग डिस्कवरीज इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ओके क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर रे नेक्स्ट जिनसटा को हमको कोन करिवार अछि ना अरेंज करिवार अछि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर माने कोटा फास्ट आसिला कोटा ता परे आसिला ठीक अछि क्रोनोलॉजी माने हिस्टोरिकल वे रे हम देखिबा कोटा फास्ट आसिला तापर कोटा लास्ट रे माने फास्ट रु लास्ट पर्यंत हम सजै चलियो फास्ट ठीक अछि डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन याको तो सब बेले हमको फास्ट रे रखिया को पड़े हम जानि छथि न्यूक्लियर साइंस बा न्यूक्लियर साइंस रो फास्ट स्टार्टिंग तो इलेक्ट्रॉन रो डिस्कवरी रु ही आरंभ होइछि तो सब बेले फास्ट ही रहइबो डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन देन रदरफोर्ड न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम या फिर डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन या फिर बोर मॉडल ऑफ एटम अच्छा हम समस्त जानछंती बोर होछंती रदरफोर्ड रो पीएचडी स्टूडेंट तो रदरफोर्ड सियोर प्रथम बाहर करछंती रदरफोर्ड न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम तापरे बोर मॉडल ऑफ एटम
तापरे डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन माने फर्स्ट है डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन ए तापरे ना रदरफोर्ड न्यूक्लियर मॉडल बी तापरे आसीगला हमर बोर एटॉमिक मॉडल डी तापरे आसीगला हमर कोन डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन सी सो तो करेक्ट आंसर इज ए बी डी सी ऑप्शन 1 ए बी डी सी ठीक अछि करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर इज ए बी डी सी ठीक अछि नेक्स्ट क्वेश्चन ओके मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2 ठीक अछि से कोन कहि नेक्स्ट क्वेश्चन मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2 लिस्ट 1 रे फर्स्ट कोन कहि व्हाट इज फैराडेस लॉ व्हाट इज एम्पियर मैक्सवेल्स लॉ गॉस लॉ फॉर मैग्नेटिज्म गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ओके से कहि ना मैच करिया चलो first the Gauss law of electricity we know option 1 D is 1 then Faraday's law okay Ampere's Maxwell law and Gauss law of magnetism ता माने the correct answer is A B C D A goes to कौन A goes to 2I B goes to 3I C goes to IV and D goes to I double I triple I IV I double I triple I IV I so the correct answer option is option 4 clear next question question number 7 कौन कहि ना a 0.5 meter long solenoid has 500 tons and has a magnetic flux density 2.5 into 10 to the power minus 3 Tesla at its center the current flowing through is and mu naught is given as this first though n equal to n divided by l number of tons kete dechi 500 divided by 0.5 ठीक अछि so total n equal to केते गला हमरो 500 into 2 which is equal to 1000 okay समस्ते clear okay n समस्ते बाहर कर देलो 1000 then b magnetic flux केते देछि magnetic field flux 2.52 into 10 to the power minus 3 Tesla okay b equal to 2.52 into 10 to the power minus 3 Tesla means b equal to mu naught n I कौन बाहर करने कही करंट बाहर करने कही सो I equal to B divided by mu naught n B कहते देछि 2.52 into 10 to the power minus 3 ठीक अछि divided by mu naught 4 pi into 10 to the power minus 7 into 10 to the power 3 okay so 2.52 divided by 4 pi into 10 to the power minus 6 plus 7 केवल 10 to the power 1 okay that is 25.2 आंसर कते बारिबो 25.2 divided by 4 into 3.14 केते बाहरला
ओके यार कैलकुलेशन नियरली 2. So the correct answer is जना भी पड़ुଛି 25.2 हेले 4 3 12 तळे 12 ऊपर 25 पाखापाखि 2 रो पाखापाखि ही आसीबो. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 2 दैट इज 2 एम्पियर. ओके नेक्स्ट क्वेश्चन. Next question is a ring of 10 centimeter radius carries a uniformly distributed charge. The ring rotates at a constant angular speed of 40 pi. Okay, a ring of 10 centimeter radius carries a uniformly distributed charge. The ring rotates at a constant angular speed of 40 pi. Okay, the perpendicular to its plane. If the magnetic field at its center is this, the charge carried by. जदि सेंटर रे तोर मैग्नेटिक फील्ड एतिक अछि देन चार्ज कैरिड बाय. ओके तुमरो आई कोन ना आई तुम लिख परिबो क्यू माने चार्ज इनटू ओमेगा डिवाइडेड बाय 2 पाई. ओमेगा माने तुमरो 40 पाई एडी गिवन अछि. ओके देन तुमरो कोन ना बी इक्वल टू म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 2r. ओके म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 2r. ओके से पचारिछि कोन बाहर करिवार अछि हमको q. तो लेट्स पुट इक्वेशन 1 एटा को धन्य इक्वेशन 1 एटा इक्वेशन 2. चलो हम कोन करिया फर्स्ट इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 रे पुट करिवा. यदि हम इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 रे पुट करिवा कोन हबो ना b इक्वल टू म्यू नॉट q ओमेगा डिवाइडेड बाय 4 पाई r. ओके ओके चलो b फर्स्ट रखी दवा म्यू नॉट रे अच्छी कोन ना 4 पाई सॉरी ओके म्यू नॉट टाको पुट करो दैट इज 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7 ओके डॉट क्यू बाहर करिवार अछि ओमेगा 40 पाई डिवाइडेड बाय 4 पाई इंटू 10 सेंटीमीटर. ओके 10 सेंटीमीटर. बाकी कथाटा होची 10 सेंटीमीटर को हमको मीटर ही कन्वर्ट करने पड़ो कारण कूलम रे आंसर टा अच्छी. सो 0.10 मीटर है ना 0.10 मीटर. अच्छा कोठी कोठी कंफ्यूजन हो परियो ना एटा गोटे एटा -7 तो 4 पाई को 4 पाई काटी दियो 10 टू द पावर -7. ओके 0.10 माने एको तुम जदि ऊपर को नहीं जीवो केते होला 10/100 थिला ना तो 1 डिवाइडेड बाय 100 तो 10 टू द पावर -2 एडी कर देले ये एठू कटि जो. ठीक अछि तो चलो कौन हो गला ना b इक्वल टू 40 पाई इंटू 10 टू द पावर -9 एडी 10 टू द पावर -7 थिला. क्लियर एडी 10 टू द पावर -7 थिला. ठीक है गोटे मिनट एटी 10 टू द पावर -7 एटी 10 टू द पावर -2 10 टू द पावर -9 ये 4 पाई को 4 पाई कटि जाइछि तो तळे किछि नै आउ एटी 40 पाई आ ये हला q. ओके इनटू q. सो q इक्वल टू तोर कोन हे जिवो ना b डिवाइडेड बाय 40 पाई इंटू 10 टू द पावर -9. ओके 3.8
3.8 divided by 40 pi. 3.8 divided by 40 pi. देखो केते कोन आंसर आछी मैच करो. ओके, ऑप्शन 1 करेक्ट नुहे मु जाननी कोनडा ऑप्शन आसीओ गोटे मिनिट. सो द करेक्ट आंसर चेक करके मते को. Correct answer is 3 into 10 to the power minus 5. Okay. Now, question number 9. आउ थोड़े पिला माने जणे दोची ना वर्तमान तुम छ आशीष इन एजुकेशन यूट्यूब चैनल रे सब्सक्राइब करो फॉलो करो. ठीक अच्छे, लाइक करो समस्त वीडियो को. आउ पिला जदि तुम मैंने ऑनलाइन नापे चाहूच ताले वीडियो फास्ट रे मु तुमको कहि देथिली जे आमर ऑनलाइन भी कोचिंग सेंटर अवेलेबल अछि, सॉरी ऑफलाइन भी कोचिंग सेंटर अवेलेबल अछि. हम ऑनलाइन भी कोचिंग प्रोवाइड करूछु. ऑनलाइन पाई नंबर गोटे देथिली से नंबर रे कांटेक्ट करो. ओके, आउ ऑफलाइन पाई भुवनेश्वर बीजेबी कॉलेज पाखरे कल्याणी कॉम्प्लेक्स नागेश्वर टांगी पाखरे अछि नियर विवेकानंद मार्ग. सेठे की कांटेक्ट करि परिबे. सब बळे हमर सार रोचंते एडी आशीष सर ताको आसी कांटेक्ट करंतु. पाखरे हॉस्टल सुविधा भी अछि. ठीक अछि, ऑफलाइन भी क्लास चलछि. ठीक अछि, भलसे समस्त क्लास नहीं पारियो. यदि जॉइन करिवार अछि आज ही कांटेक्ट करो. 50% ऑफ भी बोधे चलछि. सारंकर प्रीवियस वीडियो रे देखि दबो कोन यदि ऑफ अछि सर तुमको कहि देबे. ठीक अछि, चलो लेट्स ग्रो टुगेदर. ओके, a laser beam has intensity this. Laser beam has intensity this. The amplitude of electric field in this beam is. The amplitude of electric field in this beam is. And given epsilon naught is equal to 8.85 into 10 to the power minus 12. ओके, ताले आको केमती करिबा ना इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी गोटे मिनट. इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी I इक्वल टू तुम कौन हाफ C epsilon naught E naught square. ओके, तुम कौन देछि एटा तुमको गिवन अछि. से कोन पचारिछि द लेजर बीम हैज इंटेंसिटी दिस द एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन द बीम इज E naught से पचारिछि. तुमसे पचारिछि E naught रो वैल्यू केते. तो चलो सिंपली बाहर करो 2i डिवाइडेड बाय C epsilon naught का रूट ओवर इक्वल टू E naught. ओके, मु जानने ना मझे मझे कोन पे तार कलर चेंज जाउछि. ओके, तो जानिबो किछि सेमती सेही कलर रो अलगा किछि मीनिंग नै. ओके, सो द E naught इक्वल टू 2 into intensity केते देछि 2.5 into 10 to the power 14 divided by C समस्त को जणा अछि 3 into 10 to the power 8 into epsilon naught is 8.5 8.85 into 10 to the power 12. So E naught equal to root over 5 into 10 to the power 14 divided by 3 into 8.85 into 10 to the power 20. 5 divided by 3 into 8.85 into 10 to the power 3. कौन भाई ना देखो एटी 20 ये 14 सहित कटिकी 10 to the power -6 सॉरी -3. ओके, 10 to the power -6 ये रूट ओवर को बाहर को निकले 10 to the power -3. ओके, कैलकुलेशन कोड मिस्टेक कले कि
2y divided by c epsilon naught. ओके ठीक अच्छे चेक करो एथर को ऑप्शन मैच करूची मो हिसाब रे तो एटा हम मो हिसाब रे ऑप्शन आसीबा कथा ऑप्शन 2 4.3 into 10 to the power 8 ओके ठीक अच्छे आथर देखियो कोनटा भूल अछि ओके नाउ क्वेश्चन नंबर 10 कौन अच्छी ना ए मोनोक्रोमेटिक source of light operating at 100 watt emits 4 into 10 to the power 20 photons per second. The wavelength of the photon is गोटे मोनोक्रोमेटिक सोर्स रो कौन ना फोटोन टे 100 वाट एनर्जी मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट ऑपरेटिंग एट 100 watt emits 4 into 10 to the power 20 photons per second. The wavelength of this. Okay. First तो आम चलो करदे ना पर फोटोन रे केते एनर्जी आछ पर फोटोन रे केते एनर्जी अछि पर फोटोन पावर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ फोटोन लेट्स से n इक्वल टू 100 divided by 4 into 10 to the power 20. Okay, so which is equal to 1 by 4 into 100 means 10 to the power 20 into 10 to the power 2 ये वाला 10 to the power 2 so 10 to the power minus 18. Okay, that is 0.25 10 to the power minus 18. Okay, which is 2.5 into 10 to the power minus 19 joule. जूल रे एनर्जी समस्ते पाई गले कोन 10 to the power minus 19 जूल. ओके कौन पचारि वेवलेंथ एनर्जी ऑफ एनी फोटोन is h nu. Energy of any photon is h nu, which is hc divided by lambda. Okay, lambda बाहर करिवार अछि. Lambda is the wavelength, so hc divided by e energy, which is equal to अच्छा चलो एटा को h cot c या फिर h cot c भी कर परिबो नल नाही तुम जदि आकु MeV रे कन्वर्ट करिया पय चाहिबो बा इलेक्ट्रॉन वोल्ट रे कन्वर्ट करिया पय चाहिबो दैट इज 2.5 divided by 1.6 इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाय 10 to the power minus 19 तो ऊपर को गला हरी. ओके ठीक अछि इलेक्ट्रॉन वोल्ट हे गले केते हे जिवो तमरो टिके गोटे मिनिट कैलकुलेट कर दवा ताले हमको इजी हो. 2.5 divided by 1.6 1.5625. okay 1.56 yes 6 1.5625. ओके 1.5625 hc रो वैल्यू केते ना 19 सॉरी hc रो वैल्यू 1239 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट फॉर मी डिवाइडेड बाय एको जदि तुम मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट रे लिखिबो ताले कोन
1.5 इंटू या फिर याकू जदि भी तुम इलेक्ट्रॉन वोल्ट रे लिखिबो ठीक अछि इंटू सॉरी इलेक्ट्रॉन वोल्ट सो 1239 डिवाइडेड बाय 1.5625 1239 डिवाइडेड बाय इक्वल टू 792.96 into 10 to the power minus 15 into 10 to the power 6 which is equal to 10 to the power minus 9. Okay, which is equal to 10 to the power minus 9. 792.96 into 10 to the power minus 9. अच्छा चलो एक जदि याडे घुचे आनिबा तीनटा याडे घुचेले that is 0.792 into 10 to the power minus 6 meter. This one is the answer, which is equal to 0.8 micrometer. So the correct answer is 0.8 micrometer. Option 4 is the correct answer. Okay, ठीक अछि. Next go to the next question. Let's go to the next question. Okay, this is question number 11, I think. 11 कौन होची? In the AC circuit as shown in the figure, the resistance R is 200 ohm, the capacitance C is this, and the inductance is this. Has क्वेश्चन कट हो जाइए 72 वोल्ट माने से कौन कहूँ कहल इनपुट टाक तो से कहूँ 72 वोल्ट and the frequency is 60 hertz. Then amplitude of the current is okay. Amplitude of the current पाई फास्ट हमको इम्पिडेंस बाहर करिया पड़िबो. फास्ट इम्पिडेंस बाहर कर सला परे हमें आराम से एम्पलीट्यूड बाहर करि परिबा. केमती ना I equal to V naught divided by Z. Z is impedance. Impedance पाई हमको फास्ट तीनटा करो रेजिस्टेंस बाहर करिया पड़िबो. ओके, ओमेगा L ओमेगा C तापर R सो बाहर करिकी तार रूट ओवर नेले बोधे Z बाहर हमरो. ओके, इम्पिडेंस Z equal to root over of R square plus omega L minus omega C रो square. ठीक अछि, ठीक अछि. ओके, फर्स्ट ओमेगा L बाहर को पे हेले फ्रीक्वेंसी इनटू माइक्रोफैराड is the capacitance. Okay, omega L is बस जोड़ा को तुम माने सॉरी ओमेगा L was that is XL. समझते भूल बुझियो सेटा हो ना. omega L into L which is equal to omega L माने omega simply omega into L which is equal to 60 into L केते देछि हमको 230. 230 into 10 to the power minus 3. ओके, कैलकुलेट करो केते आछि. 60 into 23 divided by 10. 6 into 23 divided by 10.
कौन तो गोटे भूल कर थोड़ा चलो क्वेश्चन को रीड करवा ट्राई करवा okay in the AC circuit as shown in the figure the resistance R is this okay let's say first question रो information extract करिया 200 ohm okay the capacitance C is C equal to 15 microfarad या फिर 15 farad 15 into 10 to the power minus 6 farad okay and inductance is 230 mil okay L equal to 230 into 10 to the power minus 3 okay which is equal to 23 into 10 to the power minus 2 inch okay as V equal to 72 okay and F sorry frequency equal to 60 hertz अच्छा frequency equal to 60 hertz माने omega equal to 2 pi f which is 3.141 into 2 into 60 केते हे जिवो 2 into 3.141 into 60 which is 376.92 या फिर 377 ओके डब्ल्यू बाहरी पड़ला ताहले हमको जेड बाहर करिवार अछि जेड बाहर कले भी हम पाखरे अछि हम आई बाहर कर परिबा जेड केमति बाहरिबो दैट इज r स्क्वायर प्लस xl माइनस x0 स्क्वायर ओके फॉर xl केमति बाहर करिवो ओमेगा इनटू l व्हिच इज 377 into 377 into L माने 23 into 10 to the power minus 2 केते आसीगला तमरो ना 86.7 एक्सेल आसला देन xc केमते आसीबो xc equal to 1 by omega c that is equal to कौन 1 by omega c 1 by omega equal to 377 into 15 into 10 to the power minus 6 which is equal to xc रो वैल्यू तमरो 176.8 ohm 176.8 ohm ठीक अछि वर्तमान पुट करो जेड रे r square equal to 200 रो स्क्वायर प्लस xl minus xc 176.8 minus 176.8 minus एक सेकंड 176.8 minus 86.7 90.1 प्लस 90.1 रो स्क्वायर देखो एटी गोटे नेगेटिव साइन आसीबा कथा बट स्क्वायर रे किछि फरक पड़ेनी स्क्वायर हे गला नेगेटिव साइन हटि जो तो एतरु जेड बाहर करो तापरे v रे सॉरी i बाहर करिया पे v by z ठीक अछि नेक्स्ट क्वेश्चन को मूव ऑन करबा ठीक अछि एतरे जदि का कुछ डाउट अछि कमेंट सेक्शन रे पुन पचारो मु उत्तर देबे ठीक अछि नेक्स्ट क्वेश्चन okay a transformer in a power station operates at Vp equal to 8.5 kilovolt on the primary side and supplies electrical energy
to a village, Vs equal to 240 volt. Consider that the transformer has purely a resistive load. The power factor of unit, the ratio turns by माने NP by NS केते से पचारिछ. अच्छा, purely resistive transformer means सेटा गोटे purely resistive transformer means से गोटे ideal transformer. For any ideal transformer गोटे आइडियल ट्रांसफॉर्मर पाई Vp by Vs equal to Np divided by Ns. Okay, Np divided by Ns. Okay, Np by Ns equal to Vp by Vs. अच्छा चलो Vp by Vs माने 8.5 बाकी into 10 to the power 3 किलो वोल्ट अच्छी ना डिवाइडेड बाय 240. ओके माने कहते 850 डिवाइडेड बाय 24. यार आंसर केते आसला देखो 850 डिवाइडेड बाय 24. 850 divided by 24 is equal to 35.4, which is equal to 35.4. So the correct answer is option 3. एटी केवल गोटे जिनस देखिबार थिला ना प्योरली रेजिस्टिव लोड विषय कहूँ माने दैट इज आइडियल ट्रांसफॉर्मर. ओके नेक्स्ट क्वेश्चन. Okay, question number 13 I think. Question number 13 से कौन कही a polarized sheet is rotated between two crossed polaroids. Okay, which one of the following is correct relation for the आगे क्वेश्चन कटि जाइए आपको ठीक अच्छे. तो चलो यू भी से आम आराम से कही पार इंटेंसिटी. इंटेंसिटी केमिति चेंज होबो ता ऊपर से पचार. ओके फास्ट तो जदि फास्ट पोलारॉइड रे जदि फास्ट पोलारॉइड रे इंटेंसिटी आई नॉट अच्छी देन आई नॉट बाय 2 नेक्स्ट इंटेंसिटी आई नॉट बाय 2 केवल जदि आम एटा केवल फाइंड आउट करने चेष्टा करबा ताले कोन आसीबो आई नॉट बाय 4. ठीक अछि देन आई नॉट डिवाइडेड बाय 4. अच्छा से कौन कही टू क्रॉस्ड पोलारॉइड्स दीटा क्रॉस पोलारॉइड्स अछि. ओके दीटा क्रॉस पोलारॉइड रु तो मान लिखि परिबो गोटे हे जिवो तमरो ओके ओके नो नो सॉरी सॉरी क्वेश्चन बुझिबारे हम भूल करछंती ना दीटा पोलराइज्ड ए पोलराइज्ड शीट इज रोटेटेड बिटवीन टू क्रॉस पोलारॉइड्स. अच्छा अच्छा सॉरी गोटे पोलराइज्ड शीट को आम रोटेट करछंती दीटा पोलारॉइड्स भितरे. ठीक अछि दीटा पोलारॉइड्स भितरे आम गोटे पोलराइज्ड शीट को रोटेट करछंती. तो फास्ट डिपेंडेंसी आसीबो sin स्क्वायर थीटा. इंटेंसिटी डिपेंडेंसी गोटे आसीबो sin स्क्वायर थीटा. आउ गोटे इंटेंसिटी डिपेंडेंसी आसीबो cos स्क्वायर थीटा. ओके तो टोटल डिपेंडेंसी जदि हमें यार I1 I2
यदि आई रो डिपेंडेंसी आम कहवा दैट इज sin स्क्वायर थीटा इंटू cos स्क्वायर थीटा। अच्छा या हमको मैच करिवार अछि तो लेट्स से 1/4 इंटू 4 sin स्क्वायर थीटा इंटू cos स्क्वायर थीटा which is equal to 1/4 into 2 sin theta cos theta square. Okay, so I equal to I naught, first तो dependency टा देखो which is I is directly proportional to sin square 2 theta. Okay, sin square 2 theta लिख परिबा डाकू sin 2 theta तापर स्क्वायर टाकू sin square 2 theta लिख देली। Okay, that is I is directly proportional to I naught by 4 sin square 2 theta। ठीक अच्छे। ओके आमे क्वेश्चन पेपर फर्स्ट हाफ कंप्लीट कर सारले। ठीक अच्छे, नेक्स्ट हाफ आमे नेक्स्ट क्लास रे कंप्लीट करबा। ठीक अच्छे, बाय पिला माने जीवा पूर्व आउ थरे समस्त को कहि दोची आशीष इन एजुकेशन चैनल रे समस्त कोन करिवो ना जॉइन हो, सब्सक्राइब करो समस्ते। ठीक अच्छे, जदी ओके आमे दीटा अगर ऑपरेट करूछु ऑफलाइन भी ऑनलाइन भी। ठीक अच्छे, ऑफलाइन भी ऑनलाइन भी। ठीक अच्छे, NCET ITEP OJE OUAT आउ तुम OTET CTET नीट जेई प्लस टू फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर ट्यूशन समस्त को पाई इटी कोन ना कोचिंग प्रोवाइड करा अछि। एटा हला हमर कोचिंग सेंटर। ठीक अछि, लोकेशन पाई तुम फास्ट एठी के आसीबो तापर एठी तुमको गार्ड मान को कहबो पड़ियो आशीष सेन एजुकेशन को जिवार अछि तापर से तुमको आसी एठी बते देबे। तो आम ऑफिस समस्त देख पार्थो एटा ऑफिस आ एसी इंस्टॉल्ड स्मार्ट क्लासरूम मिलिबो तुम मानको। ठीक अछि, एसी इंस्टॉल्ड स्मार्ट क्लासरूम मिलिबो। आ जदि तुम माने ऑनलाइन रे कोर्स परचेज करिया पय चाहछो देन ए नंबर रे कांटेक्ट करो। नंबर समस्त को सामने रे क्लियर 9692985586। आउ जदि समय लोकेशन कथा जानिबा पय चाहछो देन लोकेशन इज कल्याणी कॉम्प्लेक्स विवेकानंद मार्ग नियर बीजेबी कॉलेज भुवनेश्वर। ओके पिला माने बाय टाटा, पढ़ापढ़ी करो, कंटिन्यूस जारी रखो, बाय।